Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 4th of January 2021, Monday. Inspiration of the day is, without a plan, you are going to stay where you are. It's time to make a move. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. India get vaccine with DCGI note for SII Bharat Biotech. Finally, India's drug regulator gave its final approval to AstraZeneca and Bharat Biotech coronavirus vaccine for restricted use in an emergency situation. And after this approval, these two vaccine candidates has become the country's first two shots for immunization of vast population into upcoming weeks. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, वैक्सीन अप्रूवल को लेकर के जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस। और जितने भी इनिशिएटिव्स चल रहे थे उन सारे इनिशिएटिव्स में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि वाइडली एक्सेप्टेड थे। तो फाइनली इंडिया में जो इंडिया के ड्रग रेगुलेटर है दैट इज़ DCGI। तो DCGI ने एक्सपोर्ट एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक कोरोना वायरस जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनको इमरजेंसी सिचुएशन के यूज़ के लिए और रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए अप्रूवल दे दिया। स्टूडेंट माइंडेड, दिस इज़ फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऑक्सफोर्ड इनिशिएटिव जो वैक्सीन कैंडिडेट है वो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज़ SII मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसकी जो एफिकेसी आई थी इंडिया में, इंडिया का जो डेटा सबमिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविड की, उसकी 70.42% एफिकेसी इंडियन क्लिनिकल ट्रायल्स में पाई गई है। हालांकि अगर हम भारत बायोटेक का जो वैक्सीन कैंडिडेट है उसके एफिकेसी लेवल की बात करें तो स्टिल अभी भी उसके एफिकेसी लेवल को लेकर के बहुत अच्छा डिस्क्लोजर नहीं है, क्योंकि भारत बायोटेक वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। इट इज़ डूइंग अ स्टडी ऑन अप्रॉक्सीमेटली 25,000 volunteer and around 22,000 participants have been given at least one shot। और ऐसा कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन को या इन्हीं दोनों में से किसी एक कंपनी की वैक्सीन को मास इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो दोनों ही इस वैक्सीन के केस में, इन दोनों ही वैक्सीन के केस में अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रही है। तो अब किस पर्टिकुलर वैक्सीन कैंडिडेट का जो एफिकेसी रेट है ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग मास इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो फाइज़र की वैक्सीन को लेकर के भी हमने डिस्कस किया था कि फाइज़र की वैक्सीन को इंडिया के मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से एलिनेट कर दिया गया है या कर दिया जाएगा प्रॉबेबली, क्योंकि फाइज़र इन वैक्सीन कैंडिडेट जो है दैट इज़ मोर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू द अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स जस्ट लाइक एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक। जो DCGI की बॉडी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, that has decided to accept the recommendation of the subject expert committee। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जो कोई भी वैक्सीन होती है तो उसके अप्रूवल की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब वैक्सीन अप्रूवल की या उसके डेवलपमेंट की बात चली थी तो हमने कई बार वैक्सीन के अप्रूवल की स्टेजेस को डिस्कस किया है कि कितने स्टेजेस में होते हैं, कितने क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल में क्या फोकस होता है, दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में क्या फोकस होता है, तीसरे क्लिनिकल ट्रायल में क्या फोकस होता है। आप थोड़ा सा डिटेल में इसको देख सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज कोविशील्ड एंड भारत बायोटेक कोवैक्सीन। ऑल्दो अगर हम ट्रायल का कंपैरिजन करें तो भारत बायोटेक के ट्रायल में जो सैम्पल साइज है दैट इज़ लार्ज इन कंपैरिजन टू द कोविशील्ड ट्रायल और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इनिशिएटिव। इसमें थोड़ा सा कम आपको जो वॉलंटियर्स हैं वो कम दिखेंगे, सैम्पल साइज इज रिलेटिवली स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द कोवैक्सीन ट्रायल्स। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसी चीज़ की है कि अगर भारत बायोटेक के जो एफिकेसी रिजल्ट्स हैं वो कोविशील्ड के रिजल्ट से अच्छे रहे तो हो सकता है मास इम्यूनाइजेशन के लिए भारत बायोटेक वैक्सीन कैंडिडेट दैट इज कोवैक्सीन विल बी यूज्ड।
ऑल्दो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, मास इम्यूनाइजेशन को लेकर के, वैक्सीन अप्रूवल को लेकर के भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हैं रिलेटेड टू द वैक्सीन। उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नो लॉन्गर, दैट पार्ट ऑफ न्यूज़ इज़ नो लॉन्गर रिलेटेड टू योर करंट अफेयर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। गवर्नमेंट में एड राइस व्हीट इन PM-ASHA to end logjam. We all know that there is a protest going on. Farmer protest is going on against the farm law or farm related acts, and for that center as well as the Supreme Courts are intervening in order to resolve the issue. So center बहुत तरीके से farmers को परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को एंड करें, जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। आज की न्यूज़ में क्या है? आज की न्यूज़ में सेंटर ने एक और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, जिसमें सेंटर इज़ ट्राइंग टू इंक्लूड द पेडी एंड व्हीट इन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको हम शॉर्ट में PM-ASHA बोलते हैं। तो आप PM-ASHA का फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि PM-ASHA का फुल फॉर्म क्या है और ये स्कीम किस लिए आई थी। तो फाइनली सेंटर इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रही है कि अगर पेडी और व्हीट क्रॉप को PM-ASHA स्कीम में इंक्लूड कर दिया जाएगा तो क्या इससे फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। एंड इंक्लूजन इन PM-ASHA विल मेक पेडी एंड व्हीट एलिजिबल फॉर डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट विच एज ऑफ नाउ इज एप्लीकेबल टू पल्सेस एंड ऑयल सीड्स ओनली। तो अब इस न्यूज़ को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कंसेप्ट ये PM-ASHA का जो फुल फॉर्म है वो ये है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अभी तक इसके अंदर केवल पल्सेस और ऑयल सीड की क्रॉप ही आती थी, बट एज पर द न्यू प्रपोजल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, paddy and wheat crops are also going to be included under this scheme. And if paddy and wheat crops are included under this scheme, these two crops will also be eligible for deficiency price payment. तो अब ये देखना है ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, ये एक्चुअली कैसे काम करता है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम। सो बेसिकली PM-ASHA इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम टू इंश्योर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर। तो पहला तो जो की पॉइंट है वो ये हो गया कि दिस पर्टिकुलर स्कीम इज रिलेटेड टू MSP, that is minimum support price, and this scheme comprises the erstwhile price support scheme, that was PSS, with certain modifications and rolling out of new scheme of price deficiency payment scheme and the pilot of private procurement stockist scheme. So basically 3 schemes are the part of PM-ASHA scheme or PM-ASHA program. What are those 3 schemes? First is price support scheme, that is PSS. Second is price deficiency payment scheme, that is PDPS. And third is the pilot of private procurement and stockist scheme, that is PPPS. And all these 3 components will actually complement the existing schemes of Department of Food and Public Distribution. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि मैम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, अगर इसमें हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत ऑयल सीड्स और पल्सेस को प्रोक्योर किया था तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो पहले भी चलता था, then why government has subsumed all 3 schemes into one only? Basically, if we talk about the current MSP procurement system, that is very poor in terms of geography and crops covered. And under this, government actually pay the farmer the cost of production plus a 50% profit while procuring. और जो पहले MSP था उसमें बेसिकली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो पेडी, वीट और कुछ सेलेक्ट कैश क्रॉप्स थी उनके लिए ही होता था। बट अंडर दिस PM-ASHA स्कीम द pulses, oil seeds were also be procured. And apart from all these, there were the increasing farmer unrest across the country. So in order to channelize those or mobilize those protests and dissatisfaction among farmer, government has initiated this PM-ASHA scheme. Under this, the oil seeds and pulses were also included. And basically, if we talk in a very nutshell, ASHA scheme thus tries to address the gaps in MSP system
and it tries to give the better returns to the farmer so that their income actually can be increases. So it promises to plug the loopholes into the procurement system that was previously established. तो इसमें MSP के अलावा बहुत सारे other components just like cost of production as determined by CACP is also included. The different components would cover the gaps in the procurement on compensation mechanism for the crops, जैसे कि farmer बहुत ज़्यादा affect होते थे. Basically, PM-ASHA leads to the better price discovery across the crops, and it also ensure the crop diversification and reduce the stress on soil and water. Why? Because अगर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में भी MSP प्रोवाइड होने लगेगा तो जो फार्मर इंडिया में एक्चुअली पल्सेस एंड ऑयल सीड को नेगलेक्ट कर रहे हैं. जनरली इंडिया में टेंडेंसी देखी गई है क्रॉप के केस में, एग्रीकल्चर के केस में, कि कैश क्रॉप्स को या ऐसे क्रॉप्स जिस पर ज़्यादा MSP मिल रहा है ऐसे क्रॉप्स को फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें पल्सेस एंड ऑयल सीड्स जो थे वो नेग्लेक्टेड क्रॉप्स में आ गए थे. अगर आप देखें ओवरऑल प्रोडक्शन कई सालों से तो पल्सेस एंड ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंडिया में डिक्रीज हुआ है. तो PM-ASHA स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने इस बात की भी कोशिश करी थी कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो हो सके, फार्मर इंड्यूस हो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए, कि अगर उनमें उनको MSP मिलता है तो अभी तक पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के लिए था, अब इसमें पैडी और वीट के क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसके तहत अब पैडी, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इस तरह की जितनी भी क्रॉप्स हैं दे विल बी एलिजिबल फॉर डेफिशिएंसी प्राइस payment system. Now the question arises, what is this price deficiency payment system and how it actually works? So basically price deficiency payment system is a system where a subsidy is provided on the targeted produce in case, mind this word student, in case the price falls below a pre-specified threshold. So basically it is suggested as an alternative to the MSP where the government is involved in the procurement process at a pre-decided prices. तो बेसिकली जो MSP में लूप होल्स थे उनको रिड्यूस करने के लिए ये डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट का सिस्टम लाया गया था. अगर आपको याद हो तो नीति आयोग ने एक 3 years का एजेंडा रिलीज किया था फॉर सेंटर in order to double the income of farmer. उसी particular initiative और recommendations के तहत this price deficiency price payment system was started. So under this system, farmers are proposed to be compensated for the difference between the government announced MSP for select crops and their actual market prices. बहुत सारी क्रॉप्स के लिए अगर हम आते हैं राइस और वीट को छोड़ दें तो उसके लिए तो MSP ही चल रहा था, बट बहुत सारी क्रॉप्स के लिए ये डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम अप्लाई किया था गवर्नमेंट ने. However, this may be noted that there may be a cap on the extent to which the center will bridge this gap between MSP and the market price. ऐसा कोई नहीं कि अनलिमिटेड डिफरेंस है तो उसको गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी. नो, देयर इज अ कैप एंड दैट कैप इज डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. And for that compensation, there are numbers of requirement, like farmer has to register themselves into nearest APMC, and this particular subsidy may be transferred via DBT system. So all farmers need to have the Aadhaar linked bank account. There was a numbers of regulations. तो इस particular scheme का या जो deficiency price payment system government लाई थी, इसका कितना effective implementation हो पाया या इसकी कितनी efficiency हो पाई actually ground level पे, that क्वेश्चन इन्वॉल्व अ डिटेल्ड एनालिसिस. अब न्यूज़ में लौटते हैं. फिलहाल न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने पैडी और वीट को भी PM-ASHA में इंक्लूड करने की बात कही, जैसे कि फार्मर्स जो हैं वो जो प्रोटेस्ट ऑनगोइंग चल रहा है उसको लेकर के थोड़ा सा नेगोशिएशन की टेबल पर आना है. ऑफिशियल्स सेड द गवर्नमेंट इज टॉइंग विद द वेरियस ऑप्शंस टू ब्रेक द इम्पास एज अ फार्मर सीम्ड adamant on a legal guarantee for a minimum support price along with the repeal of 3 farmer laws as the main condition to end their month-long sit-in into Delhi borders. तो अब ये देखना है गवर्नमेंट कितना सक्सेसफुल होती है. ऑल्दो गवर्नमेंट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, दे आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस. इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं. इसमें सेंटर ने अलाउ भी कर दिया कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं दे कैन इम्पोज द मार्केट फी ऑन द प्राइवेट मंडीज इफ दे वांट. Apart from it, minimum reserve price for privatizers has also be included. तो बहुत सारे ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इम्पास. कितना सक्सेसफुल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ये
फ्यूचर की बात है फिलहाल के लिए। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। Arcelor, JSW among 6 keen on Uttam Galva buy. So 4 steel companies, that is Mittal Company, JSW Steel, Jindal Steel and Power and Vedanta owned ESL Steel all have submitted the expression of interest in order to buy the debt-laden Uttam Galva steels. Uttam Galva's admitted claims are approximately 9,070 crores approximately, with ArcelorMittal's having 87% voting share among the financial creditors. And we all know ArcelorMittal is one of the bidder who have submitted the expression of interest for buying this Uttam Galva. Currently, 1.2 million ton Uttam Galva has a cold rolling capacity per annum. On March 12, 2020, the petitioner for initiating the corporate insolvency resolution process moved by State Bank of India, one of the prime lender of Uttam Galva. And approximately 9,000 crore has been admitted as a claim for financial creditors. On October 1st, 2020, this particular case has been admitted to National Company Law Tribunal. तो अभी 4 players हैं जो जिन्होंने expression of interest show किया है. Let's see what will be the future of Uttam Galva. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी मे बी अप्रूव्ड फाइनली. तो सेंटर इज ऑल सेट टू ब्रीथ लाइफ इनटू बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, दैट इज BIS, in Union Budget 21-22 and simultaneously starts the process of amending the Bank Nationalization Act of 1970 and 1980 and the State Bank of India Act 1955. So all these 3 acts become important. And apart from this, what is bank investment company? This particular question has also become very important. So currently there is a discussion going on between central government and the Reserve Bank of India that is actually continuing since June 2020 on establishment of this bank investment company, and the lack of fiscal headroom and the fact that the valuation of these banks are low, and because of all these reasons the center stakes in some of the state run banks going above 90% because of this financial distress situation. तो बैंक्स के अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कैपिटल रेज करे इन बैंक्स के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट BIC सेटअप कर दे अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एज सजेस्टेड बाय PJ नायर कमेटी इन 2015. तो ये भी क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट बनता है कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो रिकमेंडेशन थी, आइडिया था, ये किस कमेटी ने सजेस्ट किया था? तो बेसिकली दिस BIC कंसेप्ट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय PJ नायर कमेटी इन 2015. So now central government is actually considering the second option, that is to create the BIC rather than directly participating into the capital raising plans for those banks who are actually at their lowest valuation and highest NPA stage. और अगर हम अभी देखें जो करंट सेंटर का जो स्टेक है, जो इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें कितना है, तो कैनरा बैंक 69.3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 56.9, बैंक ऑफ बड़ौदा 71.9, यूको बैंक 94.4, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 89, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 89.8, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 93.3, बैंक ऑफ इंडिया 89.1, पंजाब एंड सिंध बैंक 83.1, Indian Overseas Bank 95.8, Indian Bank 88.1, Punjab National Bank 85.6. So this is the promoter stakes in terms of percentage, that is a center stake in PSBs, and apart from this LIC have a few stakes into few banks. So now into this financial situation, government gets the option to actually exit from these 6 public sector banks. Therefore, government has decided to formalize or organize or set up the BIC, Bank Investment Company, under Company Act 2013, and this particular entity will be responsible for capital raising plans for 6 banks. अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. Let's budget come, then we'll discuss about the complete mechanism of this bank investment company. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट इनवाइट्स बिड्स टू प्राइवेटाइज BEML. तो प्राइवेटाइजेशन की वेव में गवर्नमेंट ने संडे को
bids invite करिए for strategic disinvestment in BEML, and that is after 4 years of cabinet approval disinvestment in the company. So government will sell approximately 26% out of 54.03% stake it holds in the company. And apart from it, the government will also transfer the management control as per the preliminary information memorandum released by Center for the Privatization of this BEML company. Now your today's question is, you write the full form of BEML and the key points or the business area where actually BEML operates. तो अभी की न्यूज़ इतनी है, गवर्नमेंट ने BEML के लिए बिड्स इनवाइट करिए 26% का जो स्टेक है उसको सेल आउट करने के लिए विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल. So that's all for today, students. If you have any query, you can write in comment section below. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And wishing you all a very happy and prosperous new year. Please like, share, and subscribe. Thank you.